Yes, so in last lecture we was discussing Sylow's theorem and its applications, and with the help of the Sylow's theorem and some its consequences, we are deciding whether the given group, finite group of a given order, is simple or not, means whether it has a proper normal subgroup or not. So we continue this discussion further on. Now we'll discuss the generalized Cauchy's theorem and some its consequences. So before going generalized Cauchy's theorem, we'll understand one term, embedding. What is embedding, right? Then we'll discuss generalized Cauchy's theorem, and then we'll see index theorem. Then we'll discuss embedding theorem, and in between we have some corollary and applications of this results, and again which will help to decide whether the given group is simple or not, and some other applications. So we have a new word, embedding. What is embedding? We write first definition, then we'll see. So the next definition is of embedding. Embedding or embedded. So what is embedding and embedded? So let me explain first, then I will define mathematically. See, embedding means what? See, you start with two groups. Say let's G and G bar be two groups. So this is my group G and this is my group G bar. Now you define a function from G to G bar. Say f is a mapping from G to G bar. So that's a some elements are here and some elements are here. So you define a function, right? So this function should be what? It should be, say, let me say this is what, this is the image of this one. So this function should be 1 1 1 1, right? And it should be homomorphism. So 1 1 homomorphism. If f is a mapping from G to G bar and it is 1 1 and homomorphism, then I will say that G is embedded into G bar. G is embedded into G bar. मतलब मुझे G से G बार पर एक 1 1 फंक्शन मिलना चाहिए. वो ऑन टू हो ऐसा जरूरी नहीं है. It may be on to. If it is on to, then it is isomorphism, right? But it is 1 1 and it should be homomorphism, right? So then I will say that my G is embedded into G bar. So let me give the definition. So definition, let G and G bar be two groups. Let G and G bar be two groups. We say that G is embedded into G bar if there exists a function say f from G to G bar such that first condition f is 1 1 and second is f of AB is equal to FA FB for every AB belongs to G. See, मतलब ये क्या हुआ कि मुझे अभी हमने जो पिक्चर बनाया था, see this is my G and so this is my G bar, and if I have function
f from G to G bar such that this function is 1 1 and it is, see this condition preserves composition means it is homomorphism, right? So it means what? See, if you restrict this function from G to G bar, if you look at this function f from G to G bar in this way, f is a mapping from G to f of G, the same function, right? This is what it is, f of G. Then this is what 1 1 onto and preserves composition, right? So it is isomorphism. मतलब क्या हुआ कि this G, group G is what? This group G is isomorphic. See, f is what? F is 1 1 and it is homomorphism. So f of G, image of G will be also a subgroup. See, f of G, this will be a subgroup of G bar, right? So this is itself a group. F of G is a subgroup of G bar. So this is also a group. So G is isomorphic because this is 1 1 already 1 1. Now I am considering G to f of G. So it is onto also and it is homomorphism, so it is isomorphism. So if my group G is isomorphic to some subgroup of G bar, then I say that G is embedded into G bar. So this is the meaning of embedded, or we say that एम्बेडेड होना मतलब मुझे कोई ग्रुप में से दूसरे ग्रुप पर कोई एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए जो होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 हो, राइट? तो we'll say that my group is embedded into the other group. और ये जो 1 1, ये मेरा जो मैपिंग है दैट इज 1 1, तो उसकी जो इमेज है, सो इफ यू लुक एट द ओनली दैट पोर्शन ऑफ दैट कोडोमेन ग्रुप, then that my domain group is isomorphic to that image group, right? Okay, so this is what embedded. So let us see some examples of this embedding, and before that let me write the meaning of this definition in other words. In other words, we say that the group G is embedded into the group G bar if G is isomorphic to a sum सबग्रुप ऑफ G बार के कोई सबग्रुप के साथ यदि मेरा G आइसोमॉर्फिक है, देन आई विल से दैट G इज एम्बेडेड इनटू G बार, and we denote it by writing this G and like this curved arrow, G is embedded into G bar. See, इसका मतलब क्या हुआ? G is embedded into G bar मतलब I have a function from G to G bar, say f, which is 1 1 and preserves composition, right? So then we'll say that G is embedded into G bar. So let us see some example. See, why this embedding is important? एम्बेडिंग का स्टडी करने का मतलब हमारा क्या है कि मेरे पास दो ग्रुप है, एक G है और एक G बार है. यदि मुझे ऐसा पता चल गया कि G is embedded into G bar, it means what? I have one function which satisfies that two condition 1 1 and preserves composition. So it means what? ये जो मेरा ग्रुप है G और यहाँ पे G बार है, तो ये G बार में G जैसा कोई एक ग्रुप है, G जैसा ही कोई ग्रुप है. There is one subgroup of G bar which is isomorphic to G. मतलब G बार के अंदर G जैसा कोई ग्रुप है, ऐसा हमें पता चलता है ये एम्बेडिंग से,
right? So let us see some examples. Say let us see first example. See, we know that Zn. So what is Zn? Zn. Okay, let me first explain here. See, Zn is what? Zn is, see, 0, 1, 2 up to n minus 1 with addition modulo, and it is a group. And what is Dn? Dn is x raised to I, y raised to j, where I is 0, 1, j is 0, 1, 2 up to n minus 1, and we have some communication that rule also there. X square is equal to e, y raised to n is equal to e, and y inverse x is equal to xy, or you may say y x inverse is equal to xy, something like that. Sorry, y inverse x is xy. So we have, this is Dn, right? And if you write Dn in this way also, it is what? So you take I is 0, so x raised to I is identity, so it is say identity, then y square, y cube, and so on, y raised to n minus 1, then x, xy square, xy cube, and so on, xy raised to n minus 1, right? So we have this Dn having 2n elements. So now what you do, you define a mapping from so let me write in this way. This is 0, 1, 2 up to n minus 1, and so this is Dn. Dn is e, y square up to y raised to n minus 1, then x, xy square up to xy raised to n minus 1. This is my Dn, and this is Zn. So you define f is a mapping from Zn to Dn in this way. Identity of Zn is 0, identity of Dn is e, so 0 maps to e, 1 maps to y, 2 maps to y square, and n minus 1 maps to y raised to n minus 1. So see, you can see here. Now this mapping is what? It is 1, 1. This mapping is 1, 1, and you can verify it also preserves the composition. So there is a function f from Zn to Dn, which is what? It is 1, 1, and it preserves the composition, that is f of ab equal to fa fb. So I can say Zn is embedded into Dn, right? So here first, Zn is embedded into Dn, that is Zn is embedded into Dn. So this is one example. Or you may say that is for each n belongs to n, the meaning of this thing, in other words, for each n belongs to n, there exists a subgroup H, there exists H subgroup of Dn such that H is isomorphic to Zn. ये जो जितना portion है, that will be what? It will be a subgroup of Dn. You can verify this is a subgroup of Dn, and it is isomorphic to Zn. So for each n belongs to n, there exists H subgroup of Dn such that that H is isomorphic to Zn, or Zn is isomorphic to H. So this is what one example of embedding. सी एम्बेडिंग का हम दूसरी तरह से कोई मीनिंग देखें तो एम्बेडिंग मीन्स व्हाट. सी सपोज आई हैव दिस piece of wood and suppose if I have this portion, ये portion मैंने निकाल लिया है वुड में से, एंड इफ आई
replace this portion by glass, and suppose if I replace this portion by glass exactly with this shape and it is fit, so what I have, this is what, this is a glass and this is what, this is wood. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये जो ग्लास है, ग्लास इज एम्बेडेड इनटू द वुड, राइट. ये जो वुड का मटेरियल था, वुड की शीट थी, उसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया और उसके जैसा ही पोर्शन हमने ग्लास जो दूसरा मटेरियल है उसका मटेरियल हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो मतलब ये स्पेस फिल हो गई है. सो समथिंग लाइक हैपेंड हियर ऑल्सो. सी हियर डीएन इज व्हाट, दिस इज अ वुड मटेरियल. तो उसमें से जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन हमने निकाल लिया और दैट पोर्शन इज रिप्लेस्ड बाय Zn, बिकॉज दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इट इज अ साइक्लिक सबग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, and every cyclic group of order n is isomorphic to Zn. So this portion is replaced by this Zn. तो मतलब ये Zn में Dn में Zn जैसा कुछ पोर्शन है. So that is embedded into Dn. Zn is embedded into Dn. Dn में Zn exactly Zn जैसा कुछ है with the different symbol. So this is what the meaning of embedding. तो मतलब एम्बेडिंग का स्टडी का पर्पस क्या है कि कोई मुझे ग्रुप दिया है तो वो ग्रुप में किसी और ग्रुप को मैं एम्बेड कर सकता हूँ. मतलब कि जो ग्रुप दिया है उस ग्रुप में कोई दूसरे ग्रुप जैसा कोई पोर्शन है, सब ग्रुप है, ये ग्रुप में कोई ऐसा सब ग्रुप है जो कोई दूसरे ग्रुप जैसा हो, देन वी से दैट दैट ग्रुप इज एम्बेडेड इनटू दिस ग्रुप. तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी आप Dn ले लो, सपोज मेरे पास D20 है, तो D20 में Z20 जैसा कोई एक ग्रुप बैठा है, D20 में Z20 है. अब D20 से अभी हमने बोला D20, तो Z20, तो Z20 इज एम्बेडेड इनटू D20, मतलब D20 में Z20 जैसा है. अब Z20 में 10 इज व्हाट, 10 इज अ डिवाइजर ऑफ 20, तो Z20 में 10 ऑर्डर का एलिमेंट है, 10 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 10 ऑर्डर का मेरे पास एक सब ग्रुप भी मिलेगा इसको Z20 को. तो Z20 के अंदर Z10 एम्बेडेड है, Z10 Z20 में एम्बेडेड है, Z20 D20 में एम्बेडेड है. मतलब इनके जैसा सब ग्रुप इसमें है और इनके जैसा सब ग्रुप इसमें है, राइट. तो मतलब इनके जैसा सब ग्रुप इसमें आपको मिलेगा. तो Z10 इज ऑल्सो एम्बेडेड इनटू D20. सो दैट इज द कोसिक्वेंस. मतलब इसमें जो भी एम्बेडेड होंगे तो वो इसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके जैसा इसमें कुछ है. एम्बेडिंग होना मतलब इनके जैसा इसमें कुछ होना. तो इसमें जिसके जैसा है उसके जैसा इसमें मिलेगा आपको. सो इट इज समथिंग लाइक ट्रांजिटिविटी, राइट. सो हियर आई एम नॉट एग्जैक्टली प्रूविंग द ट्रांजिटिविटी, बट इट इज एग्जैक्टली ट्रांजिटिविटी, राइट. नाउ लेट अस से वन मोर एग्जांपल. See you consider Zn. Again let us start with Zn. So Zn means what? It is 0, 1, 2 up to n minus 1. Okay. Now Zn is what? It is generated by 1 and order of 1 is n. Now you look at SL2R. Now you consider a element, say A is equal to cos theta minus sin theta and cos theta. You consider this element. And what is theta? And we are where theta is what? E to the power 2 pi by n. Theta is e to the power 2 pi by n. You consider this element. Then you can verify determinant of A is what? Cos square plus sin square is 1,
and so determinant of A is 1, 2 by 2, and all these numbers are real. So here A is what? A belongs to SL2R, and you can verify. See, if you look at A square, and it is very famous matrix, A square will be what? Cos theta minus sin theta, cos theta, sorry, sin theta, and cos theta into the same matrix, and you can verify it will be cos 2 theta minus sin 2 theta, sin 2 theta, and cos 2 theta. See, in fact, let me give you the general way. See, you define the matrix A alpha. A alpha is this one: cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, and A beta. A beta is what? Cos beta, sin beta, minus sin beta, and cos beta. Then what is A alpha into A beta? So you can verify. You just multiply first row, first column, etc. And if you use some trigonometric formulae, then you can say or you can prove it is what? Cos alpha plus beta minus sin alpha plus beta. It is very elementary exercise, so you do yourself. Just I mention you cos alpha plus beta. You can verify. It will be this one. So it is what? It is just A alpha plus beta according to this notation, right? So A square, you can say it is what? A theta. So A square is what? A theta into A theta. A theta into A theta. So it is A theta plus theta, that is A2 theta. So you have this thing, right? Okay, so so it will be this, and if you put the value of this theta, then okay, but now I'm interested into the order of the A. Yes, so we are interested in to find out the order of A. So A square will be 2 theta. So what is theta? It is, no, it is not e to the power, it is, you just consider 2 pi by n. Theta is what? 2 pi by n. So in particular it will be what? It will be cos 2 into 2 pi by n minus sin 2 into 2 pi by n, sin 2 into 2 pi by n, and cos 2 into 2 pi by n. So if you consider A cube, then here I have 3 2 pi by n, 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 A raised to 4. So it will not be 1 0 0 1, right? So when I have A raised to n, then n will get cancelled. So what will be A raised to n? Let me see. So A raised to n will be what? It will be cos n theta minus sin n theta, sin n theta, and cos n theta. So it will be what? Cos n theta will be what? 2 pi. This will be 2 pi sin 2 pi minus sin 2 pi and cos 2 pi. So it will be 1 0 0 1, and it is what? Identity matrix. So in short, A belongs to SL2R, and this order of this matrix is n. So now if you consider H is equal to subgroup generated by A, then it will be what? It will be a subgroup of SL2R. So इस प्रोसेस से हमें क्या मिला कि मुझे कोई भी n दे दे, n belongs to n, positive integer. So with that help of n, I will consider theta is 2 pi by n, and I consider a matrix A 2 by 2 of SL2R, and its order will be n. तो एक मुझे सब ग्रुप मिल गया n ऑर्डर का, और वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और उसका ऑर्डर भी n है. तो मतलब क्या हुआ कि SL2R में एक साइक्लिक सब ग्रुप है,
जिसका ऑर्डर, यर ऑर्डर ऑफ एच विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ एच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए एंड इट इज व्हाट एन. तो एन ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है SL2R में. तो साइक्लिक सब ग्रुप मतलब Zn, राइट. तो मतलब क्या हुआ, Zn जैसा एक सब ग्रुप है मेरा SL2R में. Zn जैसा एक सब ग्रुप है SL2R में. सो Zn इज एम्बेडेड इनटू SL2R. So this is a process to obtain subgroup like Zn in SL2R. So Zn is embedded into SL2R. मतलब SL2R में Zn जैसा एक ग्रुप है. So second is what, Zn is embedded into SL2R. So that is for each n belongs to n, there exists H is a subgroup of SL2R such that H is isomorphic to Zn. मतलब SL2R में भी Zn जैसा सब ग्रुप. मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि SL2R में for every n I have a subgroup like Zn, means in SL2R for given n I have an element of order n. n ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा और वो ये तरीका है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं वो एलिमेंट. ओके, सो Zn is embedded into SL2R. Now let us see one more example. See what you consider. So what is Dn? Dn is what? It is what we can write in this way, x, y, where x raised to I, y raised to j, where I is 0, 1 and j is 0, 1 to up to n minus 1, and x square is identity, y raised to n is equal to identity, and that yx is equal to xy inverse, or yes, that is commutation law. Okay, so now what I am considering, now you consider SL2R. SL2R को देखिए आप. Now in this SL2R you consider one element, say A is what, this one, minus 1, 0, 0, minus 1. Diagonal matrix. Diagonal entries are minus 1, minus 1. Then you can verify this S square is what, 1, 0, 0, 1, and that is what, identity matrix. And A belongs to SL2R. इसका डिटरमिनेंट आपको 1 मिलेगा. So order of A is 2. Now you consider B is equal to the previous matrix, that is cos theta, negative sin theta, and cos theta, where theta is equal to 2 pi by n. Then you can say this B belongs to SL2R, and order of B is what, it is n. So now if you consider this set, A raised to I, B raised to j, right, A raised to I, B raised to j, then A raised to I, B raised to j, where I is 0, 1, j is equal to 0, 1 to up to n minus 1. And already we have what, this S square is identity, and B raised to n is also identity. And here one communication rule is what, it is a yx is equal to xy inverse. So here if you compare these two things, then what I have, my x is A and y is B. Now let me just check this condition, what happened with this. So yx, so y means what, here y means B, BA. So let us just find out what is the BA. So B is what, cos theta minus sin theta and cos theta,
into A is minus 1 0 0 minus 1, and its product will be what? Minus cos theta into 0 0 0 sin theta, then minus sin theta 0, and 0 minus cos theta. Yes, so this is what BA. Now let us see AB inverse. What is AB inverse? A is minus 1 0 0 minus 1, and inverse of B. Inverse of B means what? It is 2 by 2. So you just interchange the diagonal elements. So it is what? Cos theta, and change the sign of secondary diagonal element, that is minus sin theta and sin theta, into multiply by determinant of this, but determinant of this this is 1. So if you find this product, then this is what? Minus cos theta 0, minus sin theta 0. यहाँ पे क्या हुआ था? माइनस कॉस थीटा 0, देन 0 minus minus plus cos theta, and what happened here? AB inverse. Yes, so minus cos theta 0, minus sin theta 0, and 0 minus minus plus sin theta, and 0 minus cos theta. So if you compare these two, then that are not same. So BA and AB inverse are not equal, and what I want this condition, that is what BA is equal to AB inverse. I want this condition, I want equality, but here I didn't get it. Okay, so let me make some change. So let me consider A is not this one, A is this one, 0 1 1 0, right? Then A square will be what? So implies A square will be 0 1 1 0 into 0 1 1 0, and its product will be 0 1 0 0 0 0 0 and 1 1. Yes, so it is identity, right? So A square is identity. Now determinant of A is 0 minus 1, so it is the element of GL2R, not SL2R. Determinant is not 1, it is minus 1, right? So you think about GL2R, not SL2R, you look at GL2R. Now you consider B is this one, then of course determinant of B is 1, so it is element of GL2R of course, and order of B is n. And now what happened with this? Let me just verify. So BA will be what? So BA will be here. Now in place of this I have 0 1 1 0, so it is 0 and minus sin theta, so this entry will get changed. So this is what it is, minus sin theta, then 1 0, so it is cos theta. Now sin 0 and cos theta, and this one is sin theta, and so it is just sin theta. Fine. Now BA inverse. So now B is changed, so it is 0 1 1 0, and B inverse is the same one, so it is 0 and minus sin theta, so this one is minus sin theta, and 0 cos theta, so this is cos theta, 0, so this is cos theta, and sin theta, this one is sin theta. Yes, so now BA is equal to AB inverse, this condition satisfied, right? So if you consider all this, so A is element of GL2R, B is an element of GL2R, so it's all the powers, and its multiplication will be elements of GL2R, because GL2R is a group, so it is a subgroup of GL2R, and it is what? It is nothing but it is generated by AB, so it is something like
it is in fact it is Dn. So if you consider a mapping from Dn to this, and it is a subset of Gl2R, then it will be 1 1, and it will preserve the it preserves the composition also. So in short, what I have in Gl2R, I have a subgroup like Dn. So Dn is embedded into Gl2R. So this is one information. So we have third thing, Dn is what? It is embedded into Gl2R. मतलब Gl2R में आपको कोई भी n दे दे पॉजिटिव इंटीजर, तो Gl2R में आपके पास Dn जैसा एक सब ग्रुप होगा. सी इनफैक्ट Dn इज एम्बेडेड इनटू Sl2R ऑल्सो. यहाँ पर जो मैंने वो मैट्रिक्स लिया था -1 0 1, वो ये सब कंडीशन होल्ड कर गया, लेकिन ये जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रहा था. बट वी कैन कंस्ट्रक्ट सम अनदर मैट्रिक्स A which satisfy this condition also. But you try in homework to construct that type of matrix. But let us be happy with this Gl2R instead of Sl2R. So Dn is embedded into Gl2R. So that is, it means what? That is for each n belongs to n, there exists a subgroup H of Gl2R. Gl2R such that H is isomorphic to Dn. So if you combine these three results, combine means if you look at these three results, then Dn में एक Zn जैसा सब ग्रुप है, Sl2R में भी एक Zn जैसा सब ग्रुप है, और Gl2R में भी एक Dn जैसा सब ग्रुप है. राइट? Okay, so we have these three results. Let me rewrite all this in short way. Zn is embedded into Dn. Second one is Zn is embedded into Sl2R. Third one is Dn is embedded into Gl2R. So if you combine these two things, first one and third one, Dn can be embedded into Gl2R. Fine. Now let us consider one more example of embedding. So you consider Sn, group of permutation, Sn, the group of permutations. On AND symbols. So we are familiar with this group Sn. Now what we consider, now you look at Gl2R. See what I want to prove. I want to prove this. The fourth thing is Sn is embedded into Gl2R. मतलब Gl2R में एक Sn जैसा भी कोई सब ग्रुप है उसमें, राइट? कोई भी आपको n दे दिया, सपोज से n इक्वल टू 4, तो S4 में 24 एलिमेंट है, तो Gl2R में आपको एक 24 ऑर्डर का एक ग्रुप मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा Gl2R का, 24 ऑर्डर का सब ग्रुप, विच इज आइसोमॉर्फिक टू S4. सो लाइक फॉर एनी गिवन n you have a subgroup in Sl2R which is isomorphic to Sn. So let us try to prove वो कैसे मिलेगा हमें. So I'm just giving the construction. So you look at Gl2R.
Now you consider In. In is what? In is identity element of SL2R. In is identity element of SL2R. तो ये in आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है GL not GL2R. You look at GL NR, not 2R. Sorry, it's NR. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? इट इज C1 C2 अप टू Cn, right? Where C1 is what? C1 is like this 1 0 0 etc. and its transpose column matrix, column vector. C2 will be 0 1 0 and so on 0 and its transpose second column. So in general C1 C2 up to Cn. Okay, so this is my In. Now I am defining one thing, and you take sigma belongs to Sn. कोई permutation ले लो, sigma belongs to Sn. For example, suppose S4, then sigma is what? It is a permutation on 4 symbol, right? And you define sigma In. ये जो sigma है वो मेरा Sn का एलिमेंट है. In is what? In is a identity matrix in not SL, it is GLNR, right? वो In आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट, सो इन दोनों का प्रोडक्ट सिग्मा In मीन्स व्हाट? आई एम गिविंग द डेफिनेशन. सो सिग्मा n मीन्स व्हाट? ये जो In था, so let me write sigma here. Sigma and In is what? C1 C2 up to Cn. So sigma In is what? It is just like this. Here sigma will be operated on 1, so C sigma 1. So first column is replaced, first column of identity matrix is replaced by the sigma 1th column of the identity matrix. So let me explain you sigma 2 like C sigma n. So this is my sigma En, right? So let us understand what it exactly want to say. See, for example, you consider sigma belongs to S4, and sigma is what? 1 2 3 4 3 1 2 4 and 2, like this. Okay, so what will be sigma? Okay, here I am in S4, so I will consider I4. So I4 is what? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 sorry 1 1. So it is like C1 C2 C3 C4. So this is my C1 C2 C3 and C4, correct? Now sigma I4 will be what? It will be C sigma 1 C sigma 2 C sigma 3 C sigma 4, like this. So this is what? C sigma 1. Sigma 1 is what? 3. Sigma 2 is what? It is 1. C sigma 3 is what? 4. And sigma 4 is what? 2. So like this. So this is what? C3. So first third column of identity matrix. C3 is what? C3 is third column of identity matrix. So third column of identity matrix is 0 0 1 0. So it is 0 0 1 0. Then C1, so it will be first column of identity matrix 1 0 0 0. C4, that is fourth column of identity matrix 0 0 0 1. And second column of identity matrix
0 1 0 0. So sigma I4 is this one. So it is just permutation of the columns of identity matrix. So how it permutes? So it permits according to the sigma. So this is my sigma I n. So if I write in is this one, where ci's are this, and for sigma belongs to Sn, you define sigma in is equal to sigma this c1 c2 up to cn, and that is c sigma 1 c sigma 2 and so on c sigma n. So this is also a matrix obtained by permuting some columns of identity matrix, and this matrix is known as PPM, primary permutation matrix. This matrix is known as primary permutation matrix, and you can verify the determinant of this is also non-zero because you are just interchanging the column, right? So determinant will be just by 1 or -1, right? So sigma in, so and so therefore this sigma in, this will be also element of GLNR, right? Sigma in will be also GLNR. So corresponding to what I do here, corresponding to every sigma belongs to Sn, यहाँ से कोई एलिमेंट लिया Sn में से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हेल्प से मैंने एक सिग्मा in नया मैट्रिक्स बनाया, राइट? वो भी GLNR में आ रहा है. सो corresponding to every element of Sn, I have one element of GLNR, and you can verify for different sigma you have this different matrix, so it will be 1 1, and you can verify it is a homomorphism also. So let me give the exact mapping. So now you define F is a mapping from Sn to GL NR in this way. F of sigma is equal to sigma in. Then F is 1 1 and F of sigma mu is equal to F sigma to F mu. You can verify this. It is simple exercise, right? So you just verify it. So therefore what I have proved, Sn is embedded into GLNR, राइट? तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है नेट में, मतलब ये जो हमने डिस्कशन किया उसका हमें यूज़ करना था. विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. और ये जो प्राइमरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सो यू कैन प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा in इज सेम एज ऑर्डर ऑफ सिग्मा. तो जो नेट में प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था कि कुछ n इज इक्वल टू कुछ 4 दे दिया था. सो लेट A is the matrix, A is the 4x4 matrix obtained by और एक मुझे सिग्मा भी दे दिया था कुछ. A is सिग्मा दे दिया था कुछ. सिग्मा इज लाइक 1 2 3 4 5, कुछ 5 में था, 2 3 वॉट एवर, आई 1 2 3 4 say 5 like that belongs to say S5. So let sigma belongs to S5. A is the matrix obtained from the identity matrix whose ith column is sigma ith column of the identity matrix. मतलब ये A is what? A is sigma i5 था. ये जो सिग्मा i5 है उसको लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया था, बट मतलब वो जो लैंग्वेज को आप अनफोल्ड करो, उसका मीनिंग निकालो, देन यू विल गेट दैट इज A इज व्हाट? सिग्मा i5.
और फिर उसने पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है. सो इफ यू यूज दिस प्रॉपर्टी, so order of A is what? Order of sigma I phi, and order of it is what? It is sigma. So you need to find the order of this only, and we know how to find the order of some permutation. You just decompose it into the product of disjoint cycle, and then it is nothing but the LCM of the length of the cycle. So that is the problem. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. You just note down this property. So this is the fourth one. Now let us see one more embedding, important embedding. Sn can be embedded into an plus 2. Very important thing. Sn can be embedded into an plus 2. Yes. See how we prove it. Okay. See, before going to prove this, let us understand one thing. See, let us consider S4. So here I am considering n equal to 4, and n equal to 4, so it is here S6, and S6 is what? It is a subgroup of S6. Okay. Say if I consider, say, sigma is equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4, so it is what? It is an element of S4. Now let me consider this element 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 2 1 3, 1 2 3 4 4 2 1 3, 1 2 3 4 4 2 1 3, मतलब ये सेम मैंने रख दिया. और यहाँ पे 5 6 दो सिंबल अलग है. सो लेट मी कंसिडर 5 and 6 as it is. So this is what it is, an element of S6. It is an element of S6 because here we have 6 symbols. So if you consider, say, this is mu, then what is the difference between mu and sigma? Here sigma is element of S4, but if I want to see this as an element of S6, then I can look this as an element of S6 in this way. Up to 4 symbol, whatever the image of 1 4 1 4 2 2 2 2 3 1 3 1 4 3 4 3, but there is no symbol after 4 in sigma. But if I want to see this sigma as an element of S6, then I have to deal with the symbols 5 and 6. So keep that symbols fixed, right? So in this way I can see this sigma and mu are something like similar, right? So in this way I can see sigma as an element of S6, right? See, in actual sense it is not the element of S6. Let me clear. This sigma is not an element of S6, but if you see in this way, right, then we can treat this sigma as an element of S6. So every element of Sn can be look in the Sn plus 2 in this way. जो भी यहाँ पर Sn में n सिंबल्स है, Sn plus 2 में 2 सिंबल्स ज़्यादा है, तो वो जो ज़्यादा 2 सिंबल है इसके हर एक एलिमेंट के पीछे आप 2 सिंबल लगा दो, जो इसके जो सिंबल है वो, और उनको एज इट इज़ रखो. देन एवरी एलिमेंट ऑफ Sn कैन बी लुक in the as an element of Sn plus 2 in this way. So we'll look the element of Sn as an element of Sn plus 2 in that way, right? So that is the idea, first thing. Now what we do, let us see.
So you define F is a mapping from Sn to An plus 2. F of sigma is equal to, here I have two cases. Sigma is an element of Sn, so sigma is even or sigma may be odd. Two cases. If sigma is even, then f of sigma is sigma. I am giving the definition of this f. And sigma is odd, so sigma क्या होगा? Sigma is odd. So sigma is what? It is tau 1, tau 2 up to tau, where tau i's are what? They are transpositions. They are transpositions. So sigma is a product of odd number of transpositions. So here's some 2k plus 1. Odd number of transposition. So what I will do, तो ये जो सिग्मा है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और इस ट्रांसपोजिशंस में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं दैट विल बी फ्रॉम 1 to n ओनली, राइट. सो इट इज सिग्मा, इट इज ऑलरेडी ऑड परम्यूटेशन. नाउ you multiply this sigma by one more transposition, that is n plus 1 and n plus 2, right? N plus 1, n plus 2. So now this sigma is this, so sigma into n plus 1 n plus 2, this is one transposition, so it will be tau 1 tau 2 up to tau 2 k plus 1 into n plus 1 n plus 2. So these are odd plus 1, so it is even, so now it becomes even, and in this case sigma is already even. So f of sigma is what? It is even in both the cases, right? So f of sigma is even, now it is even in both the cases, so it will be the element of an plus 2. ये तो आपको n plus 2 का एलिमेंट दिखेगा क्योंकि यहाँ पर n plus 1 n plus 2 आ गया है, और यहाँ पे तो इट इज ऑलरेडी इवन, तो यहाँ पे इसमें n सिंबल ही है, तो बाकी का n plus 1 और n plus 2 है वो दे आर एज इट इज, दे आर फिक्स्ड, राइट. सो देन दिस f of sigma belongs to a n plus 2 for all sigma belongs to Sn, and you can verify, it is easy to check that f is 1 1 and f preserves the composition, that is f sigma mu is equal to f sigma f mu. You can verify it easily. 1 1 is very simple. See, you can see f of, you start with f of sigma f of mu, so it means what? You have two cases, you have to work with two cases, sigma and mu, both are even, both are odd, or one odd one even. So suppose both are even, then this is sigma and mu, so f sigma f mu implies sigma equal to mu. If both are odd, sigma and mu both are odd, then it is n plus 1 n plus 2 is equal to mu n plus 1 n plus 2. So we are working in the group, so this is one, these are elements of group, so these two get cancelled, so sigma equal to mu, and sigma and mu are distinct. Sigma is even and mu is odd, or mu is even and sigma is odd, then sigma is not equal to mu, so f of sigma is sigma and f of mu is mu into this, so these two things are not equal. So like that you can verify it is 1 1 and it will preserve the composition. So I leave it into the exercise that. So in this way you define this f. सो इट इज़ 1 1, तो मुझे क्या मिला? Sn से an plus 2 के बीच में एक 1 1 मैप मिला, एंड इट प्रिजर्व्स द कंपोजिशन. सो Sn इज एम्बेडेड इनटू an plus 2, मतलब an plus 2 में Sn जैसा सब ग्रुप है. तो मेरे पास ये 5 एम्बेडिंग्स आए, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका क्या मतलब है? लेट अस सी.
कि Dn के अंदर और SL2R के अंदर फॉर गिवन n आई हैव अ सब ग्रुप लाइक Zn, मतलब के Dn के अंदर n ऑर्डर का एलिमेंट है, SL2R के अंदर भी कोई भी n के लिए n ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिलेगा क्योंकि उसमें एक Zn जैसा सब ग्रुप है। Gl2R में Dn जैसा सब ग्रुप है, GlNR में Sn जैसा सब ग्रुप है, An+2 में Sn जैसा सब ग्रुप है। ऐसा एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली कि फॉर गिवन n देयर इज अ सब ग्रुप, देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप इन An+2 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Sn। सो दैट वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर गिवन n belongs to n, there exists a subgroup H, subgroup of An+2 such that H is isomorphic to Sn। देखिए Sn में ऑड परम्यूटेशन भी है, इवन परम्यूटेशंस भी है, राइट, बट इन An+2 ऑल द परम्यूटेशंस आर इवन। तो ऐसे हमें कंपेयर नहीं करना कि इसमें तो ऑड परम्यूटेशन है तो ऑड भी है इवन भी है, ओनली इवन, तो ये परम्यूटेशन जो ऑड है तो यहाँ के किसके इवन परम्यूटेशन के इक्वल होगा, नहीं, वो एलिमेंट वाइज इक्वल नहीं है, दे आर नॉट, एलिमेंट तो दोनों के डिफरेंट है, राइट। बट एम्बेडिंग मीन्स इसका मुझे कोई सब ग्रुप मिलेगा, इसका मुझे कोई सब ग्रुप मिलेगा कि जो सब ग्रुप है वो अपने आप में एक ग्रुप होता है, वो जो ग्रुप है वो Sn के आइसोमॉर्फिक हो। मतलब के सपोज S4 इज एम्बेडेड इनटू A6, तो A6 में कितने एलिमेंट रहेंगे, ऑर्डर ऑफ A6 इज व्हाट 6 फैक्टोरियल बाई 2 दैट इज 720 बाई 2, सो इट विल बी व्हाट 360। तो इसमें 360 एलिमेंट है, तो ये 360 एलिमेंट्स में मुझे 24 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक ग्रुप बनाएगा। वो जो ग्रुप है वो S4 जैसा होगा। S4 जैसा होना मतलब कि S4 में जितने ऑर्डर के जितने एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट है, तो वो जो 24 एलिमेंट है उसमें भी 2 ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट होंगे। 3 ऑर्डर के S4 में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट आपको वो जो 24 एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे A6 में से जो ग्रुप बना रहा है उसमें भी इतने ही होंगे। सो लाइक दैट इन A6 आई विल गेट अ सब ग्रुप ऑफ S6 which is isomorphic to S4. So in that sense S4 is embedded into A6, or in general Sn is embedded into An+2. Fine. So नाउ कैलेस थ्योरम, हमारा कैलेस थ्योरम क्या था, कैलेस थ्योरम सो ये जो कैलेस थ्योरम था, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन सम प्रीवियस लेक्चर दैट एवरी ग्रुप is isomorphic to a subgroup of a group of permutation, or if you consider a finite group then it is what, it is isomorphic to some subgroup of Sn। ग्रुप का ऑर्डर n है then it is a isomorphic to some subgroup of Sn। so there are some various forms of Calais theorem, various forms of Calais theorem. So let us just list out that various forms of Calais theorem. So let me write here, not in 6, let me write here. वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैलेस थियरम। सो उसका फर्स्ट फॉर्म, एवरी फाइनाइट ग्रुप
is isomorphic to a group of permutation, to a group of permutations. Every finite group is isomorphic to a group of permutations. सेकेंड, ये जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस मतलब Sn, जो परम्यूटेशंस किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय परम्यूटेशंस, हमने वो डेफिनेशन दी थी कि इफ यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ विच इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन. तो उसको बोलते हैं बाइजेक्शन भी बोलते हैं. सो अनदर फॉर्म इज एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ bijections. थर्ड, उसको हम कोई ऑथर उसको ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं. फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस. And fourth form, if G is a group and order of G is equal to n, then G is isomorphic to a group of isomorphic to a subgroup of Sn. G is isomorphic to a subgroup of Sn. So generally we use this format, right? ये भी उसकी सेम है. इनफाइनाइट है तो भी that is the correct one, but if G is finite, in that case we can write in this way: if order of G is n, then G is isomorphic to a subgroup of Sn. ये हमने प्रूव किया है पहले कोई लेक्चर में, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? सो लेट मी राइट द सिक्स्थ वन. इफ ऑर्डर ऑफ G इज n, देखो यहाँ G n ऑर्डर का ग्रुप है. अबेलियन, नॉन अबेलियन, वी डोंट नो. इट मे बी अबेलियन, मे नॉट बी अबेलियन. सो इफ ऑर्डर ऑफ G इज n, then G can be embedded. G is isomorphic to subgroup of Sn. मतलब G को आप Sn में embed कर सकते हो. G is embedded into Sn and this is very powerful information or you may say powerful result. See, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेरे पास n ऑर्डर का ग्रुप है, कोई भी मेरे पास n ऑर्डर का ग्रुप है, तो वो आपको Sn में आप embed कर सकते हैं. तो मतलब Sn में आपको G जैसा कोई सब ग्रुप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? उसका ऑर्डर n होना चाहिए. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 9 है, राइट? तो यू लुक एट S9. तो S9 में आपको ये G जो भी है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, अबेलियन, नॉन अबेलियन, डजेंट मैटर, जैसा भी ग्रुप है, इसके जैसा आपको S9 में एक सब ग्रुप आपको मिलेगा ही मिलेगा S9 का. So this G can be embedded into S9, right? Okay. तो इसका यूज क्या है? मतलब अब हमें कोई बोले कि Sn में, फॉर एग्जाम्पल सी, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे. सपोज S4 में 3 ऑर्डर के मुझे 4 अलग अलग S4 में मुझे 6 ऑर्डर के 4 है ना, 2 स्क्वायर, forget about S4. Okay, we raise the question in this way.
सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू से 18, ऑर्डर ऑफ जी इज 18 ऑर्डर का कोई ग्रुप दिया है, और क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम ये है कि 18 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने हैं, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 18। यदि ये अबेलियन है, जी इज अबेलियन, देन वी नो 18 ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, वी नो, राइट। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, और 2 into 3 square, so here 1, so it is p1 into p2, that is 1 into 2, that is 2। तो 18 ऑर्डर के दो ही सब ग्रुप है अबेलियन ग्रुप, 18 ऑर्डर के दो ही अबेलियन ग्रुप मिल सकते हैं आपको, लेकिन नॉन अबेलियन कितने हैं, और टोटल अबेलियन नॉन अबेलियन साइक्लिक इन टोटल कितने ग्रुप है नॉन आइसोमॉर्फिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू लुक एट S18, S18 में आप 18 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स मिल सकते हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स, डिस्टिंक्ट अलग अलग। तो वो जितने रहेंगे ना उतने आपको 18 ऑर्डर के डिस्टिंक्ट ग्रुप्स मिलेंगे अप टू आइसोमॉर्फिज्म, राइट। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। क्योंकि कोई भी ग्रुप है, 18 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, तो वो S18 में तो है ही अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो एक काम करो ना, 18 ऑर्डर के मुझे कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप है ये पता करना है, तो एक काम करो आप S18 में 18 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स है नॉन आइसोमॉर्फिक, वो काउंट कर लो। वो कैसे करना है, दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन, बट यू जस्ट काउंट इट दैट इट इन सम वे, राइट। तो वो जितना नंबर मिलेगा ना, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 18, राइट। सो लेट अस गिव दैट रिमार्क हियर। So remark, remarks first, if there are k subgroups, k distinct subgroups of order n up to isomorphism, means non-isomorphic. If there are k distinct we can write in this way also, if in Sn there are k subgroups of order n which are non-isomorphic, if there are k subgroups of order n in Sn which are non-isomorphic, then number of groups of order n, then number of groups of order n up to isomorphism, RK। मतलब Sn में आपको n ऑर्डर के जितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिल रहे हैं उतने आपके पास n ऑर्डर के ग्रुप्स रहेंगे। और you can write in this way also, number of groups of order n, number of groups up to isomorphism of order n, number of groups
up to isomorphism. Of order n. This is equal to what? Number of non-isomorphic subgroups. Subgroups of order n in Sn. Number of non-isomorphic subgroups of order n in Sn. Okay, so this is what remark after this result 6, right? Okay, say if you combine these two results 5 and 6, so if order of G is n, then G is embedded into Sn, but Sn is embedded into n plus 2 also. So okay, I hope this remark is clear. So now let me further combine these two and put me that thing in terms of corollary. If order of G is equal to n, then G can be embedded into Sn and Sn can be embedded into n plus 2. That is, G can be embedded into n plus 2, right? So that is one thing. So it means what? That is, every group of order n can be embedded into n plus 2. Every group of order n can be embedded into n plus 2. Okay, now one more corollary I think we have. Second corollary, if order of G is equal to n, then G can be embedded into Sn and Sn can be embedded into GLNR. So that is, G can be embedded into GLNR. मतलब देखो, कोई भी आपको n ऑर्डर का ग्रुप दिया है तो उसके जैसा एक ग्रुप n प्लस 2 में भी है और उनके जैसा एक ग्रुप GLNR में भी है. तो ये हमें नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसमें ऐसे स्टेटमेंट थे, मतलब इन वर्ड्स, बट उसका मीनिंग जो है वो ये निकल के आ रहा था. सो दिस इज वन corollary. You may say this is corollary set number 1 and say this is 2, and we continue discussion from this one, corollary 2. Okay, fine. Now one more observation. You just recall an is simple for n is not equal to 4. A4 के सिवा कोई भी ले लो आप, A1, A2, A3, A5, A6, A7. So that is what it is, a simple. We know this result. In fact, it is known as Gauss theorem, right? So an is simple for n is not equal to 4. So if you use this result and this one, तो हमारे पास क्या आता है? See, order of G, say it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. और यहाँ पे मैं n प्लस 2 ले लूँ, n प्लस 2, ये ऑर्डर ऑफ G से n, ये n की कॉलम है. तो वन ऑर्डर का ग्रुप सिंपल ही होता है. एंड सी एवरी ग्रुप इज एम्बेडेड इनटू इटसेल्फ.
वहाँ से वहाँ का आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर दो. सो इट विल बी 1 1 ऑन टू प्रिजर्व्स कंपोजिशन. सो इट इज एम्बेडिंग, राइट. सो एवरी ग्रुप इज एम्बेडेड इन टू इट सेल्फ. सो 1 ऑर्डर का तो हमेशा सिंपल ही रहता है. 2 ऑर्डर का, प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है दैट इज सिंपल. 2 इज प्राइम, सिंपल ग्रुप. 3 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल रहेगा. 4 एंड ऑनवर्ड्स, 4 के आगे भी प्राइम आएंगे तो वो तो सिंपल रहेंगे, लेकिन 4 एंड ऑनवर्ड्स जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है दैट इज एम्बेडेड इनटू ए. एन इज 4, सो A6. 5 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो A7 में एम्बेडेड होगा. 6 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो A8 में एम्बेड कर सकते हैं उसको. 7 ऑर्डर के ग्रुप को A9 में एम्बेड कर सकते हैं. 8 ऑर्डर के ग्रुप को A10 में एम्बेड कर सकते हैं, लाइक दैट, राइट. सी ये जो ऑर्डर के ग्रुप है वो हमें पता नहीं वेदर इट इज सिंपल और नॉट. इसमें से जो प्राइम होगा वो सिंपल रहेंगे, लेकिन 6 ऑर्डर का ग्रुप वी डोंट नो वेदर इट इज सिंपल और नॉट. 8 ऑर्डर का ग्रुप वो सिंपल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इट कैन बी एम्बेडेड इनटू दिस वन एंड ऑल दिस आर व्हाट, दिस आर सिंपल बिकॉज n इज सिंपल फॉर n इज नॉट इक्वल टू 4. तो ये 4 से तो ज़्यादा ही है, ये तो सब सिंपल है. सो एवरी ग्रुप कैन बी एम्बेडेड इनटू अ सिंपल ग्रुप. एवरी ग्रुप कैन बी, वेदर ग्रुप इज सिंपल और नॉट वी डोंट नो, बट इट कैन बी एम्बेडेड इनटू द सिंपल ग्रुप, क्योंकि ये तो सब सिंपल ग्रुप है, राइट. ये A1 को आप A3 में एम्बेड कर सकते हैं, 2 को A4 में, 3 को F5 में. A4 सिंपल नहीं है, लेकिन ये जो 2 ऑर्डर का वो अपने आप में सिंपल है, तो इसको आप Z2 में तो एम्बेड कर ही सकते हैं. तो Z2 इज ऑलरेडी सिंपल, A3 is already simple. So every group, every finite group can be embedded into a simple group. Whether that group may or may not be simple, but it can be embedded into the simple group. So this is one interesting remark. And that is what? That is after this corollary. So let me give that is a remark in terms of remark. First one, every group, every finite group can be embedded into a simple group. That is one remark. And see, every finite group can be embedded into a simple group. It means what? Every finite group is isomorphic to some subgroup of a simple group, right? So this is one, and the second one is every finite group is isomorphic to a subgroup of a simple group. हर एक फाइनाइट ग्रुप कोई ना कोई सिंपल ग्रुप के सब ग्रुप को आइसोमॉर्फिक होगा. वो ग्रुप अपने आप में सिंपल नहीं है. सी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. दिस इज, सी ग्रुप मेरा फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर का ग्रुप ले लो, D10 D5. सो ऑर्डर ऑफ D5 इज 10, 10 ऑर्डर का ग्रुप है, राइट. सो दिस D5 विल बी एम्बेडेड इनटू 5 + 2 7. तो इसका ऑर्डर क्या है? 12. D5 कैन बी एम्बेडेड इनटू A12. तो ये जो D5 है वो सिंपल नहीं है. Dn इज नॉट सिंपल, राइट. ये मेरा सिंपल नहीं है, लेकिन A12 सिंपल है. तो A12 अपने आप में सिंपल ग्रुप है, लेकिन D5 इज एम्बेडेड इनटू A12. इट मीन्स व्हाट? A12 के अंदर D5 जैसा एक सब ग्रुप है. तो D5 जैसा सब ग्रुप है, देन दैट सब ग्रुप इज व्हाट? दैट सब ग्रुप इज नॉट सिंपल. तो A12 अपने आप में सिंपल है, तो उसका सब ग्रुप सिंपल नहीं है. मतलब whether this statement is true or false, and the statement is this one, subgroup of a simple group is simple, then this statement is wrong.
सिंपल ग्रुप का सब ग्रुप सिंपल हो ऐसा जरूरी नहीं। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक है, अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप अबेलियन है, लेकिन सिंपल ग्रुप का सब ग्रुप सिंपल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। A12 अपने आप में क्या है, सिंपल है, बट इट हैज़ अ सब ग्रुप लाइक D5। तो इसके पास D5 जैसा एक सब ग्रुप है, कोई होगा, नाम दे दीजिए H, तो वो H D5 जैसा है, तो वो मतलब D5 ही है, वो इसका आइसोमॉर्फिक होगा D5 के। तो D5 सिंपल नहीं है तो वो H भी सिंपल नहीं होगा। तो A12 के पास मेरे पास सब ग्रुप है, वो सिंपल नहीं है। तो मतलब दिस स्टेटमेंट दैट every subgroup of a simple group is simple, then no, it may not be simple. So in this way you can construct, right? Okay, so that's what we have about embedding, right? अभी तो हमने embedding देखा, अभी हम वो जो जनरलाइज कोचेस थियरम है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। So in next lecture we'll discuss generalized Cauchy's theorem and its application. So this is what up to here we have embedding. तो embedding मतलब कोई एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप जैसा कोई सब ग्रुप है कि नहीं, उसका स्टडी, दैट इज कॉल्ड embedding. तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट embedding देखे, and that embedding will be helpful for the problem solving. So we stop this lecture here. Thank you.